Hello students, welcome to my YouTube channel Bilak Spoken and Competitive English. Students, this is the 28th video of my channel, and in today's video we are going to learn present perfect WH interrogative, which is also known as double interrogative. So students, this part of the tense will be divided into two parts, part 1 and part 2. In part 1 we are going to learn first 14 sentences of WH interrogative, and in part 2, we will learn remaining 13 sentences of WH interrogative. So students, let us start our tense, present perfect WH interrogative. So first we say is helping verb, and the helping verbs are have and has. And main verb form we have to use third form. Now we arrange this WH pattern. Our sentence will start with WH word plus helping verb have oblique has plus subject plus third form of a verb plus object plus other words question mark. So students, so far as Hindi identifications and rules are concerned, already we have seen, but for your confirmation, once again I am telling you the Hindi identification and rules. So Hindi identifications are, first one is चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, and चुकी है. And the second identification is या हूँ, ये हूँ, ये हैं, ये हो, या है, and ई है. And now we see the rules here. So, has helping verb is used only with third person singular, and with the rest of the persons have helping verb is used. So now let us see the examples according to number wise. Okay, so example number 1. For example, we say in Hindi, तुम लोग चिड़ियाघर में क्या देखे हो, या तुम लोग चिड़ियाघर में क्या देख चुके हो. So our English sentence will be here. What have you seen in the zoo? तुम लोग चिड़ियाघर में क्या देखे हो, क्या देख चुके हो. What have you seen in the zoo? Now we see the example number 2. Suppose we say in Hindi, कितने बजे ट्रेन प्रस्थान कब कर चुकी है, या किस समय ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है. And our English sentence will be at what time has the train departed. कितने बजे ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है, या किस समय ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है. Our English sentence will be here, at what time has the train departed. Now we see the example number 3. Suppose we say in Hindi, कब वह अपना फीस पटा चुकी है, कब वह अपना फीस पटा चुकी है. Our English sentence will be here, when has she paid her fee और हर फीस. कब वह अपना फीस पटा चुकी है, when has she paid her fees. Now we see the example number 4. Suppose we say in Hindi, क्यों वह क्लास छोड़ चुका है, क्यों वह क्लास छोड़ चुका है. Our English sentence will be here, why has he left the class. क्यों वह क्लास छोड़ चुका है, why has he left the class. Now we see the example number 5. कहाँ वे बस गए हैं या बस चुके हैं, कहाँ वे बस गए हैं या बस चुके हैं. Our English sentence will be here, where have they settled. कहाँ वे बस गए हैं या बस चुके हैं, where have they settled.
Now we see the example number 6. कहां से तुम अपनी किताबें खरीद चुके हो? कहां से तुम अपनी किताबें खरीद चुके हो? Our English sentence will be here. From where have you purchased? From where have you purchased? Or even you can say about your books. कहां से तुम अपनी किताबें खरीद चुके हो? Our English sentence will be here. From where have you purchased, or from where have you bought your books? Now we see the example number 7. Suppose we say in Hindi, किस लिए मुकुल राय दल बदल चुका है या पार्टी बदल चुका है? किस लिए मुकुल रॉय दल या पार्टी बदल चुका है? So our English sentence will be here. For what has Mukul Rai changed the party? For what has Mukul Roy changed the party? किस लिए मुकुल रॉय दल बदल चुका है, पार्टी बदल चुका है? Our English sentence will be here. For what has Mukul Roy changed the party? Now we see the example number 8. Suppose we say in Hindi, किसके लिए ममता दीदी अपना जीवन समर्पित कर चुकी है? किसके लिए ममता दीदी अपना जीवन समर्पित कर चुकी है? Our English sentence will be here. For whom has Mamta Didi dedicated her life? किसके लिए ममता दीदी अपना जीवन समर्पित कर चुकी है? For whom has Mamta Didi dedicated her life? So students, there is a speech problem, so some sentences I am rubbing. Okay, now we see the example number 9. Suppose we say in Hindi, कौन ममता दीदी को ताने मारा है या किसने ममता दीदी को ताने मारा है? Our English sentence will be here. Who has taunted to ममता दीदी? किसने या कौन ममता दीदी को ताने मारा है? Who has taunted to Mamta Didi? Now we see the example number 10. Suppose we say in Hindi, किसे या किसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? किसे या किसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? Our English sentence will be here. Whom has the police arrested? किसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है या किसको पुलिस गिरफ्तार की है? Whom has the police arrested? Now we see the example number 11. For example, we say in Hindi, किसके साथ वह मेला गई है? किसके साथ वह मेला गई है? Our English sentence will be here. With whom has she gone to fair? किसके साथ वह मेला गई है या किसके साथ वह मेला जा चुकी है? Our English sentence will be here. With whom has she gone to fair? Now we see some more examples. Suppose we say, example number 12. Suppose we say in Hindi,
क्या से चोर ताला खोल चुका है या किस चीज से चोर ताला खोला है. So our English sentence will be here, with what has the thief opened the lock? With what has the thief opened the lock? क्या से या किस चीज से चोर ताला खोल चुका है या खोला है. With what has the thief opened the lock? Example number 13. किसके द्वारा वे गोपनीय जानकारी प्राप्त कर चुके हैं या किसके द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा वे गोपनीय जानकारी पाए हैं, प्राप्त किए हैं. So our English sentence will be here, by whom have they got the secret information. किसके द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा वे गोपनीय जानकारी पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं. By whom have they got the secret information? Now see the example number 14. For example, we say in Hindi, किस ट्रेन से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं. किस ट्रेन से या किस ट्रेन के द्वारा किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं. Our English sentence will be, by which train have the farmers reached to Delhi? By which train have the farmers reached to Delhi? किस ट्रेन से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं. Our English sentence will be here, by which train have the farmers reached to Delhi? So students, for today we conclude our class here. Thank you very much for watching and listening me attentively. See you again in next video. Till then, goodbye to everyone. Take care of you.